ओके गाइस, तो अब तक हमने जो डिस्कशन है वो इस एस्पेक्ट पे कर ली है कि जो आपका फीडबैक मैकेनिज्म है आपकी बॉडी में काम कैसे करता है, इस चीज़ की तरफ हम मूव कर रहे थे। एंड आई वाज टेलिंग यू गाइस कि वी हैव टू लुक certain terminologies before going into that discussion. So we have looked at these terminologies, that is what is stimulus, what is receptor, what is sensory neuron, what is inter or relay neuron, and what is then motor neuron, and what is an effector. So we have already discussed all these things, alhamdulillah. Now we can move into the main discussion, that how a feedback system works in our body, how the feedback system perform its function, how the homeostatic control is achieved in the body. So beta, homeostatic control is achieved in your body by a specially designed system, and that specially designed system is a feedback system. That specially designed system is a feedback system. ठीक है जी, feedback system. And जो हमने अभी terminologies पढ़ी है बेटा, these terminologies has to play, or they play a very important role in this feedback system. So feedback system is the mechanism by which homeostatic control is achieved in your body. ठीक है जी, कोई भी चीज अगर आप मेंटेन कर रहे हैं अपनी बॉडी में, कांस्टेंट लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो द मैकेनिज्म और द मोड बाय विच योर बॉडी इज डूइंग दिस फंक्शन इज योर फीडबैक सिस्टम, इज द फीडबैक सिस्टम. तो फीडबैक सिस्टम है क्या, हाउ इट वर्क्स? इट इज अ वेरी सिंपल सिस्टम. एज यू नो फ्रॉम द वर्ड फीडबैक, फीडबैक मीन्स क्या होता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने दी होती है, आपके पास आई होती है, आप उसके रिगार्डिंग फीडबैक लेते हैं, एंड उस फीडबैक के रिस्पॉन्स में फिर आप जो है वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं. तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे बाय विच फीडबैक मैकेनिज्म वर्क्स इन योर बॉडी एज वेल. सो body, the control center, the brain and the spinal cord are called the control centers of your body. They are continuously taking in the feedback. They are continuously taking in the information. They are continuously receiving all the information, and once they receive the information, they process it and they integrate that, whether it is the normal information, which means कि क्या ये homeostatic control में ही है, range normal range की observation है, या फिर ये observation above or below the range जा रही है. And if the information tells control center that some aspect is going above or below the range, then control center activates its function, and through analyzing that feedback फिर वो क्या करता है, उस चीज को वापस रेंज के अंदर लाता है, चाहे नीचे लाकर या ऊपर लाकर. तो दिस इज हाउ द फीडबैक सिस्टम वर्क. तो फीडबैक सिस्टम की जो वर्किंग है, अगर मैं उसकी वर्किंग स्कीम आपसे शेयर करूं, तो बेसिकली इनपुट is taken in, input is taken in by the control center, and then after integration output is given. Let me show you this in another diagram also from my notes. अगर आपको diagram में concept मैं देना चाहूँ, तो just look at this diagram. Look at this diagram. You can see the stimulus is received. As we have already discussed, the stimulus is always received by receptor. Receptor receives the stimulus, and stimulus क्या था, अगर recall कीजिए अपने mind में, it was a changing signal. तो any changing signal is received by आपका जो receptor है, and then receptor, or also called as sensor, transfers this information to the control center via sensory neuron, the neuronal circuit. We have also talked about that in the few minutes ago. Control center को information मिल जाती है, then control center again integrates, decode the information, decides the appropriate response, and then send that appropriate response through again the motor neurons and to effector, and effector gives the final response and reacts to that stimulus. ठीक है, let me highlight it, let me complete this diagram. Just give me 1 minute. I should open it in with this. Okay, now just 1 minute. Okay, here we are बेटा. ठीक है, you are seeing right now my notes, जो आपको हार्ड कॉपीज में भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला. ओके, जस्ट अगेन वी आर बैक एट द डायग्राम. लेट मी कंप्लीट दिस डायग्राम फॉर यू. ठीक है, आई वांट टू जस्ट
mention few things here. Stimulus is received by sensor, also called as receptor. ठीक है जी, also called as receptor. मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये सही से लिखा है. ठीक है जी, stimulus is received by sensor, also called as receptor. Okay, and then this green line is showing the sensory neuron, and then this control center will be either brain or spinal cord. Then this green line is showing the motor neuron, and this effector would be either a gland or a muscle. ठीक है जी, and then response is the output. So if I take you back to the to my board, so we were discussing this aspect that input is received from stimulus. Then it is transported or transferred. This information is transported or transferred to the control center. After integration, output is generated and it is responded through effectors. So this is the basic mechanism or basic working scheme of the feedback system in your body, and this is how the feedback works. It is continuous. The concept is very simple. कोई भी चीज आपकी बॉडी में अगर मेंटेन करनी है, उसका फंक्शनल प्रिंसिपल बहुत सिंपल है. कंटिन्यूसली उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव की जाएगी और इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा. वंस वो चीज अबव या बिलो द रेंज जा रही होगी तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर चेंजिंग स्टिमुलस आपके रिस्पॉन्सेज डिसाइड किए जाएंगे, जो कि इफेक्टर्स के जरिए आउटपुट की फॉर्म में जो है वो रिलीज होंगे. तो ये हमारा एक बेसिक स्कीम है फीडबैक सिस्टम का. ठीक है, अगर मैं इसको एक और तरीके से बनाऊं, पूरा डिटेल्ड स्कीम बना दूं, तो हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस है बेटा, इट इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर, then receptor transfers this information to sensory neuron, then sensory neuron transfers this information to control center or relay neuron, then control center integrates the information and transfer this information to the motor neuron, and the motor neurons carry this response or output to the effectors. So this is what we call as feedback pathway. This is फीडबैक पाथवे. एक चीज मैं आपको और भी यहाँ पर बताना चाहूँ बेटा, मैंने A2 क्लासेस के हवाले से सिलेबस का, व्हेन आई गेव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस, आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ sections in your paper 4, section A and section B. The essay type question is included in section B, and in that particular type of question I always urge my students के आपसे जो भी सवाल पूछा जाए, after writing an explanation, draw that in form of marking scheme or in form of a rough sketch, because it gives a great impression on the examiner, on the checker, and inshallah ta'ala you will be getting good marks in your essay type question, where a lot of students जो है ना वो average mark ले पा रहे होते हैं और अच्छे या higher end पे mark score नहीं कर पा रहे होते. तो बेटा ये आपके पास एक scheme है, we call it feedback pathway. I hope कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरह से feedback system काम करता है. Now अब हमने जो अपना सवाल क्रिएट किया था वो क्या था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है. देन भी हमने क्वेश्चन किया कि जनाब होम्योस्टैटिक कंट्रोल ज़रूरी क्यों है, जहां पर मैंने आपको ग्लूकोज लेवल का फ्लक्चुएशन समझाया, वाटर लेवल का फ्लक्चुएशन समझाया, मैंने आपको टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन समझाया. उसके बाद हमने सवाल किया कि भाई होम्योस्टैटिक कंट्रोल अचीव करेंगे कैसे. उसके लिए पहले हमने टर्मिनोलॉजीज देखी एंड फिर हमने देखा कि हाउ एग्जैक्टली द फीडबैक सिस्टम वर्क्स, वर्किंग प्रिंसिपल देखा हमने कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को कंट्रोल में लाया जाता है. नाउ दिस पाथवे वर्क्स इन टू फैशन. This pathway of feedback works in two fashion, and therefore we categorize the feedback path into two types. ठीक है, feedback path into two types. Feedback system is categorized into two types. The positive feedback बच्चे and the negative feedback. Positive feedback and the negative. Pathway remains the same, but
द वे बाय विच इट एक्ट्स और रिस्पॉन्ड, और इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन हमें दोनों में नजर आता है वो डिफरेंट है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है जी, तो इस टॉपिक के ऊपर जो हमारी डिस्कशन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। अब तक के हमने डिस्कशन में जो चीजें सीखी हैं मैं क्विकली रिपीट कर देता हूं। वी हैव लर्नड होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है, वी हैव लर्नड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, वी हैव लर्नड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू होम्योस्टेटिक कंट्रोल, एंड देन वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। नाउ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फीडबैक और द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जिसमें हमने बताया कि दो तरह का रिलेशन है, एक को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं और एक को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तीसरा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अच्छे से अपने पास देखिए और अच्छे से इसको रिवाइंड और फॉरवर्ड करके देखिए और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने पास जो है ना वो नोटबुक में नोट भी कीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलते हैं।